पढ़ना नहीं भूलना, ठीक है? कल क्लास कितने बजे याद है ना तुम्हें? कितने बजे क्लास है कल? हाँ। डिफरेंशिएशन ऑफ function function to the power function. For example, if you have y is equal to f of x raised to power g of x, then how to answer these type of questions? Taking log on both sides. Yes. So you take log of both the sides and then differentiate. For example, if you have y is equal to x to the power x, we can't use differentiation of x to the power n because this is a variable. We can't use a to the power x also because this is a variable. So we take log of both the sides. Taking log, and as you know, calculus mein you have to take log with respect to e only. So I might not write to the base e, but it means to the base e only. This is log x to the power x to the base e. So this would be log y. And here you apply the property of log x log x. So we have taken log of both the sides. And then we have used property of log. This property you have used many a times. Log a to the power n is n log a. If you have log a base to the power m, it will be in the denominator. 1 by m log a to the base b. If you have log of a to the power n base to the power m, it would be n by m log a to the base b. And now we can differentiate. So differentiating both the sides. Hmm. So derivative of log y would be 1 by y into dy by dx, chain rule. And here you apply product rule. Derivative of x is 1. So dy by dx is y, which is x to the power x, 1 plus log x. And this will be used many times for entrance. So I'll assume, it'll be good if you can remember this result. Derivative of x to the power x is 1 plus log x into x to the power x. It'll save time. Differentiation of x to the power x into 1 plus log x. You can further simplify this. 1 you can write as log e to the base e. So it can also be written as x to the power x log ex to the base e. क्या लगता है कि मम्मी आपकी ये दुश्मन है क्या? क्या मैं तेरे को दुश्मन लगती हूँ अपनी? ये तेरे को पढ़ लो। वो तो बोलना पढ़ो, तुम्हारी मम्मी की आवाज थी ये। टेंशन देती रहती तुम बार बार। Right? So this is function involving x to the power x or variable to the power variable, function to the power function. Now more questions. Find dy by dx.
Answer these two questions. और जो सेकंड वाला फॉर्मूला लिखा था वो एक बार फिर से लिख दोगे प्लीज। सेकंड वाला, d by dx of x to the power x is x to the power x log of ex into x to the power x. Because one को we write log e to the base e, and then we use property of log a. Log a into b, is log a plus log b. But remember that log of a plus b is not equal to log a plus log b, right? So you might make this silly mistake, so avoid it. This is not true. Log of a plus b cannot be log a plus log b. मनसीरत, नंदिनी, कैमरा ऑन करो। श्रेया, ठीक है। फाइंडिंग लिमिट, फिर मैं तुमसे कहा था डेरिवेटिव के क्वेश्चन करना, किए तुमने? बहुत बैड सीन चल रहा है तुम्हारा। Differentiation I'm talking about. Taking log of both the sides, x to the power sine x. So log y would be sine x into log of x, differentiating both the sides, 1 by y dy by dx. Sine x, you apply product rule this side, so it will be cos x, log x as it is. Derivative of log x would be 1 by x. And mind it, you're not taking limit, so don't substitute. Sin x by x is 1. So that's your answer. Simple. In the second question, the most common mistake is that you people take log of both the sides just as it is. And then, the common mistake is taking log of both the sides. And then you write log of, log of sin x to the power log x plus log of tan x to the power x. This is the blunder. Never do this. कौन सा? टेकिंग log of both the sides, log y हो गया। प्रॉपर्टी ऑफ, दिस इज इफेक्ट ऑफ जंक फूड। जंकी बन गया बिल्कुल। So never make this kind of mistake. This is done. So for the second question, what we do is we let this as u and this is v. Differentiating with respect to x, we have dy by dx is equal to du by dx plus dv by dx. Call it equation number 1, where what is u? U is sin x to the power log x and v is tan x to the power x. And then take log individually and then differentiate. Take log individually and then differentiate.
Then after that, you know how to answer this question. You can start from here, taking log of both the sides, using property log x into log of sin x. On differentiation, it will be 1 by u du by dx. Over here, you apply property. Derivative log x would be 1 by x log sin x. Then log x as it is. When you differentiate log sin x, we don't have a formula for this. Assume this to be x. So it will be 1 by sin x. And then derivative of sin x, which is cos x. So du by dx will be u into log x, log of sin x by x plus cot x into log x. So now we see that differentiation of log sin x is cot x. And when you learn integration, you'll come to know that integration of cot x is log sin x. They're just reverse process. So integration of cot x would be log sin x. हाँ हाँ, you can't use this directly. वो तो बताया था मैंने, log of a plus b is not log a plus log b. ये this is incorrect. This is not correct. हाँ, वो फर्स्ट स्टेप में तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे ना. So never do this. So similarly, second part you can answer, and then you substitute. This is du by dx. Equation number 2. You find dv by dx also. We know that v is tan x to the power x. Again, taking log of both the sides, log v is equal to x log of tan x. Differentiation 1 by v dv by dx, and x derivative is 1 log of tan x. X as it is, derivative log tan x would be 1 by tan x, and tan x would be sec square x. So now we have dv by dx also, which is v into log of tan x plus x sec square x by tan x. Equation number 3. So now from 2 and 3, you substitute du by dx and du by dx in 1, and that's your answer. So questions involving function to the power function need to be answered like this. All right. फिर से बस ऐसे ही छोड़ दें डी डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स. पहले कैमरा ऑन करो, फिर बात करो मेरे से. मैं कह रही हूँ कि हम इसे ऐसे ही छोड़ दें डी डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, या नहीं फिर नहीं नहीं. मतलब After finding du by dx, dv by dx, you have to substitute these two over here, and that's your final answer. आगे सॉल्व नहीं करना ना. नहीं, replace u को replace कर देना. What is u? U was sin x to the power log x. Replace v also. What was v? V is tan x to the power x. So this dv by dx, this du by dx, you substitute both over here, and then that's your answer. Right? Any other question? Because because dy by dx is du by dx plus du by dx. Assignment.
नंदिनी, वो कौन सा क्वेश्चन था तुमने वैसे पूछा था? फिर कौन सा? वो लास्ट क्लास में यू वर आस्किंग सम क्वेश्चन ना? सर वो इंटीग्रेशन का था। अरे नहीं। अच्छा ओ। हाँ। y equals to log of cos x to the power x minus e to the power minus असाइनमेंट x। में कौन सा क्वेश्चन है वो? सर थर्ड है इसी चीज का। ओ हाँ सर, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट इम्प्लिसिट के पहले वाला होगा। आई कांट फाइंड इट, फॉरगेट इट. Differentiation of inverse trigonometric functions. Now, in these kind of questions, the 90% solving of the question would be basically to simplify the question. Then after simplification, differentiation will be very easy. The first part is how to simplify the given question. So you should know the identities of inverse trigo, because an entrance will be using this identities directly. Sine 2 theta is 2 sine theta cos theta. So if I take sine theta as x, right? Then theta would be sine inverse x. Sine theta is x, that is sine theta is x by 1, because 1 would be hypotenuse. Using Pythagoras, the base would be 1 minus x square, right? So this identity, which is sine 2 theta, you can write as 2 theta sine inverse 2 sine theta cos theta. What is theta? Theta is sine inverse x. This is sine inverse x. Sine theta is x. What is cos theta from this triangle? Cos theta is base over hypotenuse. So this is the first identity which you can directly use. You know how to convert normal trigo identities into inverse identities. 2 sine inverse x is sine inverse 2x under root 1 minus x squared. For example, suppose the question is find dy by dx, and you've been given of this. Find derivative of this. So you can't apply first chain rule, then product rule, and then simplification. You can directly write in entrance, this will be 2 sine inverse x, and dy by dx will be 2 by under root 1 minus x square. For entrance, for boards, you need to show the simplification. For boards, what are you going to do? Let sine theta is equal to x, substitute, simplify, and then differentiate. So question involving inverse trigonometric function would be basically based on identities. ये लिख लो इसको.
सर ये वाला जिसमें आपने बॉक्स बनाया है, एक बार वो वाला वापस बता दो। साइन टू थीटा, नॉर्मल आइडेंटिटी यू नो ना, साइन टू थीटा हाँ क्या होता है, जी। टू साइन थीटा टू कॉस साइन थीटा। थीटा कॉस साइन थीटा। थीटा को एक्स लिया, so theta would be sine inverse x. Sine theta is x by 1. So form a triangle, right triangle, perpendicular by hypotenuse. Found the base. So cos theta would be base by hypotenuse. Now, sine 2 theta is 2 sine theta cos theta. So 2 theta will be, get sine this side. It will become sine inverse 2 sine theta cos theta. Now replace theta by sine inverse x. Sine theta is x, cos theta is this. ओके, थैंक यू। सर Hmm. सर जो आपने राइट में करा है वो पूरा करके दिखाना पड़ेगा बोर्ड्स में। Board may you have to show it. Entrance, we just like use it directly. You know this identity sine A plus B. What is sine A plus B? साइन कॉस प्लस कॉस साइन। Plus cos is sine B. We can convert this into inverse identity. कैसे? Let sine A is equal to x, sine B is equal to y, suppose. Right? So if sine A is x, what would be cos A? Cos A would be under root 1 minus x square. What would be cos B? Under root 1 minus y square. ठीक है? If sine theta is x, cos theta would be under root 1 minus x square. You can form the triangle also and do it. Right triangle से भी कर सकते हो. Now get sine other side. So a plus b would be sine inverse sine a. What is sine a? X. What is cos b? 1 minus y square the root. What is cos a? Cos a is under root 1 minus x square. What is sine b? Sine b is y. And what is a? A is sine inverse x. And what is b? Sine inverse y. So this is identity of sine inverse x plus sine inverse y. So if you know the normal identities, you should always convert that into inverse identity also. It's very easy to remember also. सर हम्म. आप एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हो वाला। हाँ, कर सकता हूँ, मेरी आवाज है मेरे पास अभी. अच्छा। Sin a plus b, sin a, cos b plus cos a, sin b. Sin a is x, sin b is y. So if you want to form a triangle, the sine of A is perpendicular by hypotenuse. Base would be 1 minus x square. So cos A would be base by hypotenuse, right? So this is cos A. Similarly, sine of B is y by 1 perpendicular by hypotenuse. Base by Pythagoras would be 1 minus y square. So cos B would be this. So now I've replaced sine A. I've replaced sine A by x, cos B by this, sin B by this, and cos A by this. And then A and B would be sin inverse x, sin inverse y. अगर प्लस होगा, there'll be plus sign, there'll be minus sign, there'll be minus sign, right? हम्म. अभी बताता हूँ, इसका इलाज करना पड़ेगा मुझे. Question for you.
इसमें अलग अलग बिठाना पड़ेगा दोनों को. Sin inverse y is equal to sin inverse root x into under root 1 minus x square plus x into under root 1 minus x. Find dy by dx. This is a question for you. ये 1 minus x है ये. So think loudly and see क्या हो रहा है. Either you apply chain rule and solve. नहीं वो नहीं लगाया मैंने. And to make it more difficult, you can write this way also. I can write it this way also. सर आपने क्या लिखा है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस X cube. अच्छा ओके And the first one I can write. Now answer this question. Find. Now this is an entrance question. Hmm? अगर शुरू में मैं ऐसे लिखता जैसे मैंने अभी लिखा है तो फिर कैसे करती तुम. अभी तो पता लग गया ना. Now think loudly. You can cheat. The answer is here. Y is equal to sine inverse. From the first root you can take out under root x. It will be 1 minus x square. From the second under root you can take out x square. It will become x. It will be 1 minus x. Now if you closely look at this identity, it is y is equal to sine inverse root x into 1 minus x square. This is x under root 1 minus root x whole square. So it's basically this identity sine inverse x plus sine inverse y. So this is sine inverse x plus sine inverse root x using this identity. And now you can differentiate this. For a moment, assume that, oh, root x is y. साइन इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव कौन करेगा. अनन्या बैठी क्यों करो. इससे पूछ लो ये मास्टर है. बॉन्ड ऑफ डिफरेंशिएशन घर में प्रैक्टिस करके आई है बहुत सारी. हाँ. तो नाउ यू नो द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स सबको मालूम है विच इज 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. Here you have to use chain rule. For a moment, assume this is x. So it'll be 1 minus root x whole square and then derivative of root x. So that is 1 by 2 root x. So knowing identities will help you. Entrance mein you can answer them faster. What way you need to simplify?
सो ये एंट्रेंस लेवल क्वेश्चन है। हाँ। ये मेरे स्कूल की बुकलेट में है। हम्म। जो मैंने असाइनमेंट दिया उसमें भी है वैसे ये। अच्छा लेकिन अगर ये इस फॉर्म में होगा तो तुम्हें पता नहीं लग पाएगा। ठीक। बहुत सारी। डिफरेंशिएट दिस tan इनवर्स 3x minus x cube 1 minus 3x square. Find dy by dx. सर, हम्म। फर्स्ट वाले में tan 3 थीटा वाला फॉर्मूला बना सकते हैं। हाँ बनाओ। डू दैट। इसलिए मैंने तो लिखा है x वो। की जगह tan थीटा पुट कर दूं। हम्म। So you know this identity tan 3 theta is 3 tan theta minus tan cube theta over 1 minus 3 tan square theta. So if I take tan theta is equal to x, theta would be tan inverse x. Get taking tan inverse of both the sides, it'll be 3 theta equal to tan inverse 3 tan theta is x, 3x minus x cube over 1 minus 3x square. Theta is tan inverse x. So 3 tan inverse x is equal to tan inverse 3x minus x cube over 1 minus 3x square. So you can use this identity. Sir, Hmm. 3 upon 1 plus x square. Hmm. 3 upon 1 plus x square. Hmm. So once you convert this, simplify this, this would be 3 tan inverse x. And after that, finding dy by dx is very easy. Even I can answer this. Second question. पेन कहाँ है तुम्हारा? पेन कहाँ गया? पेन यूज नहीं करती? अच्छा, क्या बोल रहे हो तुम? बताओ। हमारा स्कूल कौन सा है? कर लो। वेरी लॉन्ग। मान्या, कैमरा ऑन करो। हाँ सर, एक मिनट। अभी अभी आई हो ना तुम? हाँ सर, मेरा टेस्ट था ट्यूशन में, सॉरी। एनीवन हु हैज डन द सेकंड वन? फाइनल आंसर क्या आ रहा है? सर, चेन रूल लगा सकते हैं। नहीं। हम्म। चेन रूल लगा सकते हैं क्या इसमें? दोबारा बोलो। सेकंड वाले में चेन रूल लगा सकते हैं क्या? चैन रूल लगा लोगे लेकिन तुम्हारा चैन चला जाएगा। सेकंड क्वेश्चन वन लाइन का है। वन लाइन। अब सेकंड क्वेश्चन व्हाई इट्स वन लाइनर? बिकॉज
if you simplify, divide numerator by 2 and denominator by 2, right? Then this becomes identity of tan inverse x plus tan inverse 3 by 2. That's it. So you need to apply your brain. Remember that if you don't use it for a longer time, you'll lose it. Use it or lose it. वही हो रहा है ऊपर से. हाँ सोचा लेकिन किया नहीं ना. So that means derivative with dy by dx 1 over 1 plus x square. And what is derivative of tan inverse 3 by 2? Vanya? Differentiation of tan inverse 3 by 2. Quick. क्या सर? इसका डेरिवेटिव. किसका? इसका होगा 3/2 into 1/1 plus x square. अरे बावड़े will be 0. Oh, sorry, constant है. कांस्टेंट है. तुम क्या कर रहे हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो तुम? Sorry, sorry. क्या होगा इस देश का? सर मैंने ऐसे करा है कि मैंने वो करा tan y कर दिया उस तरफ शिफ्ट, उसके बाद 2x plus 3 2 हाँ तो minus this is how you answer this question. So you have to know identities. Without knowing identities, things will not work. Tan inverse, tan of a plus b. Shall I derive this? Tan a plus tan b over 1 minus tan a tan b, right? Let tan a is equal to x, tan b is equal to y. Take tan other side. So a plus would be tan inverse. Tan a is x, tan b is y. 1 minus xy. What is a? A is tan inverse x, b is tan inverse y. And that's how you get this identity. But in identity of tan inverse x plus tan inverse y, there's always 1 in the denominator. The idea was to make it 1. How you would make it 1? By dividing numerator and denominator both by 2. और अगर यहाँ plus minus होगा, it'll be minus here plus here. So now you know this identity. थर्ड का आंसर. क्या बात है. देखो, for the third question you have to do anything. This is sin inverse x, this is cos inverse x. Sin inverse x cos inverse is pi by 2. Minus minus कुछ नहीं होता. Sin inverse x plus cos inverse x is pi by 2. You know this result. So derivative of constant is शून्य. There's no need. You know the sin inverse x plus cos inverse x pi by 2. You know ये सबको मालूम है. Sin inverse x plus cos inverse x is pi by 2. Use this. Tan inverse x फिर sec inverse x plus cosec inverse x is again pi by 2. So this is cos inverse x. You should know directly how to convert sin inverse x into cos inverse. Remember this identity. Sin inverse x is cos inverse under root 1 minus x square, which is also tan inverse x over under root 1 minus x square. Remember this. You can directly convert. लिख लो ये. Sin inverse x is cos inverse under root 1 minus x square. Sometimes you've been given cos inverse x, so that you can convert into sin inverse. And that is tan inverse 1 minus root x square by x. Assignment खोलो.
सर आपके पास इंटीग्रेशन के असाइनमेंट है? क्या? इंटीग्रेशन के असाइनमेंट? हाँ है ना, चाहिए तुम्हें? हाँ, मेरा मंडे को पूरा इंटीग्रेशन का टेस्ट है। I'll share. थैंक यू सर। ओके, लिख लिया? सर एक सेकंड दिखाना प्लीज पीछे वाला स्लाइड। Question 1 on page 6. You guys answer this question. First part. Third part. First, third, and 16th. First, third, 16, page 6, question 1, differentiation of inverse trigonometric functions. So first, you need to simplify this. This question itself is a question of, inverse trigonometry simplification. So either you rationalize or make some kind of substitution and simplify, because differentiation part is a very small part. So either you can take x as cos 2 theta, or you can rationalize the denominator. One method is take x as cos 2 theta and simplify. The second one is rationalize. देखो, or else, if you're brave enough, then differentiate using chain rule. One is you can use rationalizing the denominator. Other is use x equal to cos 2 theta. What is 1 plus cos 2 theta? 2 cos square theta. And 1 minus cos 2 theta is? बेसिक आइडेंटिटीज पता भी नहीं है, कैसे चलेगा काम? 1 plus cos 2 theta is 2 cos 2 square cos theta। square theta. 1 minus cos 2 theta is 2 sin 2 square sin theta. square theta। Or else rationalize the denominator. Once you simplify, then differentiate. सर x को साइन 2 थीटा से भी कर सकते हैं ना? हाँ, उससे भी कर सकते हैं, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बिकॉज देन यू नीड टू कन्वर्ट 1 एज sin square theta plus cos square theta also. यस, ठीक है सर। Was history done? सर
हम्म अगर हम साइन स्क्वायर थीटा, नहीं साइन 2 थीटा लेंगे तो फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा ना। हाँ, but then you, and what about sine minus sine theta minus cos theta, or cos theta minus sine theta? That you need to decide, because here you'll come across a situation when you have sine square theta plus cos square theta minus 2 sin theta cos theta. अब क्वेश्चन ये है, will you write this as sin theta minus cos theta whole square, or cos theta minus sin theta whole square? Which is correct? अच्छा। Both are correct, लेकिन when you take out it from root, लेकिन वो जब खोलेगा तो काटने में प्रॉब्लम नहीं हो नहीं जाएगी। नहीं, not that. If theta is less than 45, is more than 45, this is sin theta minus cos theta. If theta is less than 45, it will be cos theta minus sin theta. Value अच्छा। of cos theta is more from 0 to 45 than sin हम्म। theta. अच्छा, ओके ओके, ठीक है। हाँ, डिनोमिनेटर रैशनलाइज। नहीं क्यों दिलाऊं, इससे पूछो. This, हाँ, this is 2 sin square x by 2. This is 2 sin square x by 2. This is 2 sin x by 2 cos x by 2. Oh, हाँ, कैसे किया? हाँ, tan. You'll get the same answer only. See, if I use cos theta thing, it'll be 1 plus cos 2 theta, 1 minus cos 2 theta over 1 plus cos 2 theta. हाँ भैया. Sir, 1 by 2 root 1 minus x square. Half single pound formula. Yes, sir. So this would be 2 cos square theta will become cos theta because root 2 will cancel out. This is sin theta. This फिर हम is डिवाइड बाय कॉस थीटा करेंगे क्या इसमें? हाँ. इसके बाद हम डिवाइड बाय कॉस थीटा I'm करेंगे। using this. Yes. Dividing numerator and denominator by cos theta will be 1 minus tan theta over 1 plus tan theta, right? Then you can convert this into identity of tan. This one you can write as pi by 4, and this is 1 plus tan pi by 4 into tan theta. Okay. So this would be tan of pi by 4 minus theta. So this is pi by 4 minus theta, which is pi by 4 minus tan inverse, no, theta. Now you need to convert theta also. X is cos 2 theta. Therefore, cos inverse would be 2 theta, or 1 by 2 cos inverse x would be theta. थोड़ा लंबा हो जाएगा डेरिवेटिव फिर. So theta is 1 by 2 cos inverse x. Now after this you differentiate. So 90% of the question was simplification only. मैंने अलग मेथड से किया है और But मेरा your answer would be the same. 2 plus 2 is always 4. या मम्मी से पूछ के करो, खुद करो, कैलकुलेटर यूज करो. So what is dy by dx coming out to be? Now differentiate. You need to differentiate in the end. It'll be 1 over 2 under root 1 minus x square, right? यही आंसर है दिव्शा. किसी ने रैशनलाइज करके किया है? उससे भी वही आंसर आएगा. आ जाओ बोर्ड पे कर दो. सर हम्म सर मुझे वो समझ नहीं आया, वो आपने जो थीटा मोर देन 45 डिग्री वो और थीटा अभी लेस देन। बताता हूँ, सबको बताऊंगा वो. आई एक्सप्लेन, वो काफ़ी यूजफुल है. इसको खुद समझ में नहीं आती. इसको खुद समझ में नहीं आती कई बार. क्या हुआ, तुमने क्या किया था? तो ये सही तो था ये. अब इसको यहीं, नहीं नहीं, यहीं पे और सिंपलीफाई करो उसको.
इसको तो फिर इसके, अच्छा हाँ राइट, इसमें भी कर सकते हैं। यू राइट कॉस पाई बाई टू, में इसको साइन में कन्वर्ट करो, इसको कॉस में करो। सो दिस विल बी साइन पाई बाई टू माइनस टू थीटा, हाफ एंगल, हाफ एंगल। हाँ हाँ, उसमें हाफ एंगल लगा दोगे। सो tan से tan इनवर्स विल कैंसिल आउट। सो शी इज यूजिंग रैशनलाइजेशन। पढ़ता है अभी तुम इसको, डोंट माइंड दिस, हाँ, बिकॉज में ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। ये रैशनलाइज करिए, बहुत इजी, रैशनलाइज वाला बहुत इजी मेथड है। नहीं है, कोई बात नहीं, एक बार समझ लो हाँ दिखा दिखा दो, वरना ये लोग फिर, एक मिनट रुको, उसको हटाना, चलो तुम लिखो लिखो। उनने हम्म, सर शी इज rationalizing the denominator, so it has to be negative only, no? So numerator will become whole square, denominator would be a plus b a minus b। बाकी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, टाइम वेस्ट मत करो इसमें। सर थर्ड क्वेश्चन क्या था? थर्ड क्वेश्चन असाइनमेंट में है बेबी। नहीं, थर्ड के बाद वाला पार्ट। 16। एक्स कट गया, इल बी टू, हाँ सिम, tan इनवर्स खा चुकी हो तुम। हम्म, एक्स नहीं लिखो ना, इसको तुम थीटा लिखो, एक्स थोड़ी होगा वो। नाउ 1 माइनस कॉस टू थीटा वुड बी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, tan इनवर्स फिर खा गई। तो 1 sin cuts, 2 cuts will become tan theta by 2। tan inverse लिखो, tan inverse of tan theta by 2, so it will be theta by 2। So theta is sin inverse x, so 1 by 2 sin inverse x। अरे sin by 1 क्या लिखती हो तुम, it is 1 by 2 sin inverse x। So by this method we get y is equal to 1 by 2 sin inverse x, and when you differentiate you get the same answer। So this is using rationalization, she rationalized the denominator, she reached over here, हैंड राइटिंग थोड़ी प्रॉब्लम है, वो खुद समझ नहीं पाती कई बार क्या लिखा है उसने। खिचड़ी बहुत पसंद है इसको। 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सो देयर वेरियस वेज टू आंसर दिस क्वेश्चन। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन वाज कि व्हेन डू यू टेक, यू सी, इफ आई हैव रूट ऑफ, सब लोग देख लो एक बार, इफ यू हैव साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर द रूट, नाउ व्हाट डू यू राइट इट, डू यू राइट इट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, or you write this as cos theta minus sin theta? Now for this, you remember that root of x square
is always mod x. ठीक है? Root of x square is always a positive number. Fine. So when to write sin theta minus cos theta and when to write cos theta minus sin theta will depend upon angle. What angle? If theta is between 90 degree and 45, we'll write sin theta minus cos theta because between 45 to 90, sin is greater than cos. But when theta is between 0 and 45, it'll be cos theta minus sin theta because from 0 to 45 degree, cos is greater. See, the graph of cos is this. This is 90 degree. This is 0. And the graph of sine is this. So from 0 to 45, cos is greater. From 45 to 90, sine is greater. So that is why sin theta minus cos theta whole square root will be sin theta minus cos theta provided theta is between 45 and 90. And if it's between 0 and 45, it will be cos theta minus sin theta. Any other question? Kaisha, when did you join? Just now? सर अभी थोड़ी देर पहले आज दूसरी क्लास से आते हुए बहुत लेट हो गया था. Sure. मेरा थर्ड पार्ट में आंसर -1 आ रहा है, उनका 1 आ रहा है. उनका गलत होगा, तुम्हारा गलत कैसे हो सकता है? क्या हो रहा है? ये लिख लेना बस. हम्म. क्या? कौन? ये कुछ नहीं हो रहा. ये अलग है. Now this which was third part, no? What is third part? Tell me. Cos inverse. Third part दिखाना. 2/√13. 2 by √13 cos x cos x. plus 3/√13 sin x. Now this is cos inverse outside. So this is identity of cos inverse x plus cos inverse y is equal to cos inverse xy minus under root 1 minus x square 1 minus y square. This is identity of cos inverse x plus cos inverse y. So if you want, you can use this, or else you can convert and then simplify also. And if there is negative sign here, it'll be positive sign here. Okay. So triangle, this I'll write as cos theta. This I'll write as sin theta. Cos theta is 2 by √13. So 2 will be base. And this is 3. 9 plus 4 is √13. सर ये आपने बस ऐसे रैंडमली रिलेट करा है ना? Randomly नहीं किया, बहुत मतलब नहीं रैंडमली एज focused इन. है because outside is cos inverse, so I want identity of cos inside cos inverse. You see, हाँ मतलब वो ठीक है हाँ बट तो रैंडम कैसे हो गया फिर ये जब अरे रैंडम नहीं. cos inverse बाहर है, I need to have this is cos की identity. In the identity of cos, we have cos A, cos B plus sin A, sin B. That means this has to be cos only. So nothing random अच्छा about it. हाँ ओके यस राइट सॉरी थैंक यू. Okay. So this is y is equal to cos inverse cos x
cos theta plus sin x sin theta. So this would be y is equal to cos inverse cos of x minus theta. Now problem is this, you can write as theta minus x also. इसीलिए plus minus का confusion is there. And this would be x minus theta. Theta is, theta I can write as tan theta is 3 by 2. So theta would be tan inverse 3 by 2. Now we can differentiate. 1 is the answer. मैंने उसे थीटा माइनस एक्स लिखा है. हाँ वो देखो, इस condition is not been given the question, so both will be considered correct. Why, but Because I cos ordered inverse of cos x, cos inverse of cos x is equal to x only and only if x is between 0 and pi. So these conditions must be given in the question. why, but usually an order इसमें theta minus x ही होगा. ऐसा कुछ नहीं है. There's no, that will be decided by the angle, you know. We have to see this. Cos inverse of cos x is possible only and only if it's 0 to pi. मान लो x lies between pi to 2 pi, then it will be pi minus x, not x. But the question, there is no condition given to us. That's why I've taken plus 1 is also correct, minus 1 is also correct. हाँ, इसको cos theta लिया, इसको sin theta लिया, right triangle से, ठीक है? So this is identity of cos A minus B. So some people are taking theta minus x, I've taken x minus theta. So when no condition has been given, both answer would be considered correct. The condition should be given that x lies between pi and 0, then this is correct, positive 1. Pi to 2 pi will be minus pi minus x हो जाएगा. Negative होता है ना, cos is negative in the second and third quadrant, second quadrant, sorry. नहीं नहीं, हाँ, हमने थीटा को tan थीटा के साथ ही क्यों निकाला? अरे इससे कांस्टेंट तुम कुछ भी लिख लो, तुम्हारा मन कर रहा है तो ऐसा करो. क्या चाहिए बताओ, वही लिख देता हूँ मैं. यू कैन राइट साइन इनवर्स 3/√13 ऑल्सो, उसका भी डेरिवेटिव 0 होगा. इफ यू वांट cos इनवर्स आई कैन राइट दैट ऑल्सो 2/√13, वो भी 0 होगा. So whatever you take will be 0 only. Until unless you make a blunder and write, 1 over under root 1 minus root 3/√13 whole square. It's a constant term, so derivative would be 0. ओके सर. सर हाँ, 16th. ये मुझे समझ नहीं आया कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स जो आपने लिखा था अभी अभी, हाँ, वो 0 से पाई के बीच में क्यों होगा? वो प्रिंसिपल वैल्यूज तुमने देखी होंगे ना, कॉस इनवर्स की साइन इनवर्स की, उस पर डिपेंड करता है. प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos inverse and sin inverse. Cos of cos inverse x will be x. X क्या होना चाहिए? Between 1 and -1. So हम्म तो फिर से बताना 0 और पाई के बीच में if x lies, तो then will it be x minus theta या theta minus x? See, cos inverse of cos theta will be theta. Take it x. Cos inverse of cos x would be x. Now this x should be between 0 and pi. Then it will be x. But if it's between pi to 2 pi, it will be pi minus x. Okay, so thank you. Next question. 16th part. What was that? Y is equal to sec inverse Of 1 upon 2x square minus 1. Now, either you use chain rule if you have time, but if we all know these results. Sec inverse x 1 by x is cos inverse x. You know this now?
tan inverse 1 by x is cot inverse x. Sin inverse 1 by x is cosec inverse x. So we can use this result. So this sec inverse I can convert into cos inverse 2x square minus 1. Then this becomes 2 cos inverse x. So dy by dx will be 2 divided by root of 1 minus x square. सर हम इधर x को cos थीटा लेट कर सकते हैं. हाँ, in the board examination you need to substitute x cos theta, applied identity, but entrance may will be saving time. I know this identity. This so I use this one. Then I use identity. See, cos 2 theta is 2 cos square theta minus 1. So 2 theta will be cos inverse 2 cos square theta minus 1. Let cos theta be x. So theta would be 2 cos inverse x. And this is cos inverse 2x square minus 1. Simple. Forget that. वो principal value है. वो करेंगे हम MCQ ना, बट बोर्ड लेवल पर नहीं आएगा ऐसा. नहीं नहीं, मतलब इस लेवल का नहीं आएंगे व्हेन यू डिसाइड कि क्या होना चाहिए. सी उसका रीजन समझ लो क्या हो रहा है. cos inverse x में what is the value of x? Tell me. X lies between 1 and minus 1. Now we have cos inverse 2x square minus 1. ठीक है, in place of x you have this. And इसको simplify करो जरा, adding 1 on both the sides. And then you find x. तो उसको यूज करके आता है वो. So if you know this identity, then you should know this. Just try to correlate. Like, I know that cot A plus B, yeah, tan 2 theta. What is tan 2 theta? Anyone? 2 tan theta over 1 minus tan square theta. So I can directly write 2 tan inverse should be tan inverse 2x over 1 minus x square. This and this are equivalent. If I know that sine 2 theta is 2 tan theta over 1 plus tan square theta, that would mean that 2 tan inverse x will be sine inverse 2x over 1 plus x square. Similarly, I can write for tan also. Oh, sorry, cos. Cos 2 theta is 1 minus tan square theta over 1 plus tan square theta. So 2 tan inverse x will be cos inverse 1 minus x square over 1 plus x square. So this is how you get identities. That means 2 tan inverse x is this also, 2 tan inverse is this also, and 2 tan inverse is this also. They're all equal. तो मुझे असली में यही समझ नहीं आ रहा कि tan 2 थीटा को आपने 2 tan इनवर्स x कैसे लिखा, और वो मुझे वो बहुत तो ही मेथड पूरा लिखना पड़ेगा फिर तो मुझे अभी इतनी सारी मैंने डिराइव तो की है इनवर्स ट्रिको की आइडेंटिटीज. लेट tan थीटा इक्वल टू x, ऐसे करो फिर. टेक tan अदर साइड. So it'll be 2 theta is equal to tan inverse. And what is theta? Theta is x. And theta will be tan inverse. आ गया. That's derivation of this identity. I wrote it directly. So you need to derive all these so you'll remember them. Like if I ask you find derivative of sine inverse
3x माइनस एक्स क्यूब कैसे करोगे टेल में? साइन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब का आंसर बताओ. Straight away, I know that this is nothing but 3 sin inverse x. आ गया आंसर. बट ये आइडेंटिटी कैसे आई? You know that sin 3 theta is 3 sin theta minus 4 sin cube theta. Let sin theta is equal to x. So 3 theta will be sin inverse. This is 3x minus 4x cube. Theta is sin inverse x. अरे नाराज मत हुआ करो तुम. ये नाराज हो गए, इसको बोला हैंड राइटिंग सही नहीं है इसकी. So you can always try to correlate between normal identities and inverse Fico identities. नहीं तो you derive, then you learn all. सबको derive कर लो एक बार. Differentiation of parametric functions. Next, right? Derivative of parametric functions. तुमने नहीं भेजा ना? मेरे से बन नहीं देखो ये मैंने इतनी सारी बनाई और मेरे से बन नहीं पाई तब भी और डिलीट में अलग है मेरे मैंने 50 बार शूट किया था क्यों नहीं बन पाए? ये देखो ये सब आपके लिए किया था मैंने एक भी नहीं हुआ. बीच में भूल ही वो गई छोटा सा बना दो. इधर आओ. We have Garima with us. She was 2-year student of BARC. She got AIR 19119 and she got through SP Delhi. And now Mike is with Garima. She'll मेनली लगाऊं कब सेकंड बात मेनली आई हैड टू फोकस पहले क्या कर रहे हो ये मत करो मैं बना के भेज दूंगी कोई मेनली मैंने मैथ्स पे फोकस किया था अच्छा ओ हाय आई एम गरिमा and I got all India rank 119 in JEE Arc and I got into SPA Delhi. Mainly I was in the 2-year program तो मैंने मैथ्स में तो बहुत अच्छे से फोकस किया था कि सारी चीज़ें नोट्स अच्छे से बना लेना सबसे ज़्यादा क्योंकि मेरे नहीं थे एंड आई जेन्युइनली रिग्रेट है मैं नहीं आती थी क्लासेस कुछ कुछ एंड बहुत डिफिकल्ट होता है हाँ 12th में मेरा थोड़ा हो गया था एंड फिर आर्ट में ह्यूमन फिगर्स दे आर मस्ट मेरी आर्ट इज़ वेरी वीक एंड ह्यूमन फिगर इज मस्ट तुम उसमें अगर स्पेशलाइज कर लो तो तुम्हारा हो जाएगा बहुत इजीली आर्ट वाला सेक्शन एंड एप्टीट्यूड में मैम क्लासेस करवाएंगी एंड में ऑनलाइन क्लासेस हर एक चीज़ का नोट्स लेना है लाइक आई रोट ईच एंड एवरी थिंग एंड फॉरेन एंड इंडियन आर्किटेक्ट्स कहीं पे चिपका लो और उसे याद करो मैंने जेन्युइनली चिपकाए थे नियर माई अलमीरा एंड आई जस्ट रेड एंड लाइक लर्न देम ईच एंड एवरी डे एंड बहुत इफेक्टिव रहता है तो एप्टीट्यूड इससे हो जाएगा मैथ्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैथ्स में रेगुलरली प्रैक्टिस करो उससे मैंने कम से कम 11 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे एंड दैट इज लीस्ट यू कैन डू एंड ऑलमोस्ट सारे सही मान के चलो कि तुम्हें सही चाहिए नेगेटिव मार्किंग मैथ्स में बहुत मुश्किल होना चाहिए मेरा तो यही था एंड ड्राइंग में तो ड्राइंग प्रैक्टिस करते रहो मेरी बहुत वीक थी मुझे एंड में बहुत डिफिकल्टीज आई थी इस वजह से आई एक्चुअली you should study all 3 subjects daily
ये मत करो एक सब्जेक्ट एक दिन में एंड देन द अदर सब्जेक्ट यू स्टडी द नेक्स्ट डे, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट. Just divide your time in three not equal parts, but divide them the way you need it. For example, if I need more time in drawing, I'll give more time to it, and I'll just balance other things out. So you have to do that as well. And you have to study all three subjects daily. That's must. मैं जब मेरा स्कूल बंद हो गया था, used to wake up at 6 and I used to study daily and sleep at 10. I'm not a night person. I'm a morning person. तो मेरे लिए वो effective रहता है. रात में पढ़ पाओ तो रात में पढ़ लो, तुम्हारा जैसा सही रहता है. बट तीनों सब्जेक्ट्स हर दिन पढ़ना है. दैट्स वेरी मस्ट. कर लो बस, मेरा बहुत हुआ है, मुझे बहुत थॉट्स आए हैं, बस कर लो कि थोड़ा टाइम बचा है. जस्ट थिंक इन दैट मैनर कि कुछ महीने की मेहनत से पूरी लाइफ सेट है. तुम अभी क्विट कर दो, तुम बाद में 5 साल बाद रिग्रेट करो कि भाई मेरा थोड़ी सी और मेहनत कर लेती तो हो जाता मेरा. एंड इट्स लाइक तुम अभी थोड़ी सी और मेहनत कर लो एंड यू जस्ट गेट इनटू द नाइस कॉलेज. दैट्स हाउ डिफिकल्ट मोस्ट ऑफ द पीपल. You should not. You should not miss any class. I'm telling, I had to ask for notes. Like, that's how bad the thing was. I had to ask for each and every class's notes. तो इस वजह से हर अगर तुमने नहीं किया है क्लास, नो वरीज, उसके नोट्स तुम नोट डाउन कर लो कि तुम्हें आता है कि थोड़ा बहुत तुमने जो भी मिस किया यू नो अबाउट इट. वो कर लो तुम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत रिग्रेट होता है उसका, जेन्युइनली बता रही हूँ. अभी मेरे पास पढ़े होंगे शायद. तुम और वैसे किसी और के नोट्स से इतना इफेक्टिव नहीं रहता है. तुम वीडियो देख के खुद नोट्स बनाएगी, फिर तू गो थ्रू करेगी, 1-2 सेकंड लगेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिटन अ होल पेज. आई नो द पॉइंट्स विच आई हैव रिटन. इफ आई एम गोना गो थ्रू इट, इज गोना बी easier फॉर मी टू नो मैंने क्या 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 सोच के लिखा था. इफ अदर पर्सन हैज रिटन इट, आधी चीजें मिस हुई हैं, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा. इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन. पहले तो आई गिव एप्टीट्यूड, फिनिश इट इन हाफ एन आवर, मैक्स टू मैक्स 40 minutes. In J exam, give 30 minutes for aptitude, max to max, like max to max 40 if not able to do it. उसके बाद मैंने पर्सनली मतलब 1.5 आवर्स उसको दिया मैंने मैथ्स को. उसमें नहीं 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 हाँ 1.5 आवर्स मैथ्स को दिया एंड 1.5 आवर्स मैं ड्राइंग को देती हूँ क्योंकि मेरी ड्राइंग वीक थी. अगर तुम लाइक 1 आवर में ड्राइंग फिनिश कर देते हो एंड 2 आवर्स मैथ्स के लिए, बहुत अच्छा है. बी प्लानिंग. So you get 3.5 hours in total. Yeah. We're gonna make you opt for both PR and B plan, even though you might not be interested in the B plan more. But we will discuss about it. I will discuss about it in the class. The best thing you can do is तुम drawing अपनी बहुत अच्छी improve कर लो. Do that, complete it in 1 hour and give 2 hours to math. And half an hour for aptitude. Practicing the daily basis. What helps? Daily basis for drawing practice, perception, 3D perception, human figures, animals, each and everything which Sir teaches. उनसे एक list ले लो. That's what we did. We potted plant, a tree. Sir gave us a list end में कि the most important things are these and you're supposed to do these. ये tips पे होनी चाहिए, तो वो tips पे कर लो अभी. Like humans, vehicles. Yeah, vehicle and buildings. In drawing we got एक तो logo था end में. एक तो वो होता है you are supposed to copy the picture and it is difficult. It's not that easy. लगता है कि हो जाएगा but you have to give enough time to it. दूसरा question is easy. One is like you're at a bus station, you're supposed to draw some figures, they'll just mention it. ये देख अगर लोगो दे रहे हैं वो, then the first pick, like for example in the second JE session 2 we got logo. दोनों questions लोगो के थे part 2 में क्योंकि the first pick was very difficult to draw. Like we had to give enough time to it. That is the reason they gave us logo. JE पहले वाले में session 1 there was another picture which we were given. उसमें we had to draw it and we got 2 options. एक I don't remember the part 2 but एक था bus station वाला and they mentioned कि whatever we are supposed to draw in it. So उस way में human figures आना चाहिए कि trolley carry कर रहे हैं, bend कैसे action में है, walking, running, standing. These are very important. Sitting, they're very important.
मैंने नहीं किया था इसलिए कह रही हूँ, बहुत कर रही हूँ वो कि कर लो। At the end of for the exam तो हाँ, करेंगे। एंड में तो मैंने कर लिया था, मैंने कवर अप किया था, दैट्स द पॉइंट। It's important that since you know this is going to be required of you in the exam, start practicing it right away. If you're able to complete it in 1 hour, it's very nice. Actually, so one detail each day is going to make you collect 30 per month. And of course, once you've drawn once, then you know you can quickly draw it once again and keep it in your mind. And after having drawn some 5, 6 times, you don't forget things very easily. It's not like you'll get rid of it अगर तुमने अभी practice नहीं किया, you'll have to cover it up. अभी कर लो तो तुम्हारे लिए easy है. If you don't do it, you'll have to cover it up the way I did. Maths strong कर लो. Maths लोग उसी में चीज होती है. Most of the people कैसे prepare? practice में. वो तो है, but the thing is that first, how do you begin? Like there are steps to it. First, you 11th practice the class questions. Then you go and see the PYQs, or do you solve the questions from the books? So first like learn the concept कि like ये नहीं कि इस तरीके के क्वेश्चन ही आते हैं, वो फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट लर्न करो. Then practice all the question which sir has made you do in the class and the homeworks he gives कि इसमें से ये सारे questions solve करना है. That means you have to practice those. उसके बाद sir has given assignments and उसमें से भी questions होते हैं, उनको go through करो. and अगर वो सब भी कर लिया तो extra वो मैंने गाइड नहीं मैंने कुछ नहीं यूज किया. मैंने यही किया था, क्लास की हो गई थे, उसी से हो गया था मेरा. GK learning for the JEE exam It's very important. and GK should be on your tips. do you think that they can brush it up towards the end of it because Mhm. it's less or it's more or it's lot more? What is it about? ये देखो एंड में द जीके विच मैम विल टीच यू, तो बुक वाली हैव इट राइट नाउ विद योर सेल्फ, वो तुम याद कर लो, पिक्स विक्स अभी से याद कर लो पूरी कि तुम्हारे टिप्स में है, जो बुकलेट 2 है तुम्हारी उसकी सारी पिक्स यू शुड नो इट ऑन योर टिप्स. एंड जो जीके मैम करवाएंगी ऑनलाइन क्लास, अभी नहीं करवा रहे ना, अच्छा स्टार्ट हो गई, उसके नोट्स बहुत अच्छी तरीके से बनाना. इट्स लाइक आई रोट ईच, मेरे एक क्लास के नोट्स फॉर एटलीस्ट 10 पेजेस, मैं स्पेस दे के लिखती हूँ, बट आई रोट ईच एंड एवरीथिंग विच मैम सेड, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो ना हो. या अलॉट मैनी, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम इट. लाइक आई गेस एक ही क्वेश्चन होगा जो नहीं था, मे बी वो भी शायद मे बी हो सकता है मैं सुना नहीं हो सकता है, क्योंकि देयर मेनी थिंग्स, बट जीके टोटली वहीं से आता है. एंड जीके बहुत इजी है अगर कर लो तो. यू कैन इफ यू नॉट फुल, एक क्वेश्चन वैसे ले ले डाइसी, मैक्स टू मैक्स, या मैक्स टू मैक्स वैसे. Genuinely hard to do. Like people will not have any idea. ये देख. ये देख आई टेल यू, जैसे मैम ने एक क्लास करवा ली, ठीक है, उसके बाद तूने सारी चीजें नोट डाउन की, रात को व्हेन यू आर लाइक गोइंग टू स्लीप एक बार रिवाइज करके सो, वरना तू भूल जाएगी अगले दिन. नेक्स्ट डे यू विल थिंक कि चलो कल कर लेते हैं, हाउ डज इट मैटर, इट डज मैटर. यू विल हैव टू रिवाइज इट दैट डे इटसेल्फ एंड देन स्लीप. वरना जीके एक होता है तुमने अभी पढ़ा है एंड देन यू रिवाइज इट, इट हेल्प्स यू. इट इज साइकोलॉजी ऑल्सो प्रेफर्ड, तो वैसे ही करना पड़ेगा. मैंने एक गलती भी की थी, जैसे मैंने सेशन 1 में मुझे इजियर क्वेश्चन जैसे पीएनसी ये सारे बहुत इजीली हो जाते थे मेरे से. मैंने सेशन 2 के टाइम पे मैंने उन पे इतना देखा नहीं है, मतलब ये तो मेरे से हो जाएंगे, आई रादर फोकस ऑन द डिफिकल्ट स्टफ. एंड मैंने वो क्वेश्चन गलत करके आई हूँ, इट वाज वेरी इजी. हाँ हो गया था एक गलत, मैंने बताया नहीं. मैं मेरे से गलत हो गया था, इट वाज वेरी इजी, आई कुड डू इट बहुत आराम से, क्योंकि मैंने फोकस नहीं किया था एंड मोमेंट पे, मतलब मेरे से तो हो ही जाएगा. सो रिवाइज ईच एंड एवरी स्टफ, कुछ लाइटली मत लेना कुछ भी. मैं मतलब या तुम क्वेश्चंस देखोगे, यू नो व्हाट फॉर्मूला टू पुट, हाउ टू सॉल्व इट. एंड अगर पैनिक कर गए कि व्हाट इफ मेरा नहीं हुआ, तो गलत हो गई होगा. अगर तू कॉन्फिडेंट है कि भाई अपना आंसर निकालो, मैच करो, क्लिक करके खत्म, डोंट थिंक अबाउट इट. मैं यही करती हूँ, आई डोंट थिंक अबाउट इट अगेन.
I did not use scale. Yeah, I did not use it. वैसे मैक्स टू मैक्स थोड़ा बहुत यूज कर लेती हूँ, बट वैसे मैं नॉर्मली किया था अपना रफली, वो हो जाता है मेरे से, क्योंकि मेनली तो ये है यार. Do you guys have any doubt, online students? I don't think so. दीदी, मुझे दरअसल ये पूछना था कि मैं अभी ट्वेल्थ में आई हूँ, तो फिर जिसमें जितनी मैं ट्वेल्थ में मैथ्स पढ़ी हूँ वो सफिशिएंट है, या फिर मैं 11th का भी एक बार फिर से हर एक चैप्टर को उतना ही टाइम दे देकर करूँ, मतलब साथ साथ? 11th का रिवाइज करो. 11th का इज ऑल्सो 11th का हो जाएगा एट अ पॉइंट. 12th में ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं एज कम्पेयर देन 11th. तो 11th का तुम रिवाइज करते रहो, वो इजीली हो जाएगा. और 12th का तो पढ़ना ही है ऑब्वियसली, वो तो स्कूल में भी पढ़ा ही रहे होंगे साथ में. और कोई क्वेश्चन? और आपने अपने ह्यूमन फिगर्स कैसे सही करे थे, मतलब ड्राइंग में? ह्यूमन फिगर्स मैं सर के साथ अलग से प्रॉपर बैठती थी, क्लास लेती थी, मुझे बहुत डिफिकल्टी होती थी ड्राइंग में, तो आई हैड टू प्रैक्टिस इट ईच एंड एवरी डे. एंड हर तरीके से यू हैव टू प्रैक्टिस ह्यूमन फिगर्स ईच एंड एवरी डे. यू कैन नॉट स्किप दीज, दे वेरी इंपॉर्टेंट. और जो 100 फिगर्स, Say that once you've drawn. हाँ, once you learn it, we go to yeah, and once you draw learn it. it, जैसे कहते हैं ना 2 minute sketch. मैक्स टू मैक्स वो बहुत इजीली ड्रॉ हो जाता है एक बार यू नो हाउ टू मेक इट. स्टार्टिंग में यू विल फेस डिफिकल्टीज. How did you balance ABSC and JE? What I did was, I gave more time to drawing क्योंकि that was the part I struggled at. फिर मैथ्स को दिया था. एप्टीट्यूड में क्लास के साथ साथ रिवाइज करती थी रात को सोते हुए, एंड प्रीवियस डे का भी साइड बाय साइड रिवाइज करती थी. एंड जितना भी आई फेल्ट कि मैं भूल रही हूँ या मुझे कुछ करना है, मैं उतना टाइम एप्टीट्यूड को देती थी. मेनली व्हाट आई गिव टाइम वाज मैथ्स एंड ड्राइंग. एंड एप्टीट्यूड हर एक चीज रिवाइज करनी है टाइम टू टाइम, वो इजीली याद हो जाती है अगर तुम रिवाइज करते रहो डेली. मुझे आपसे दो और क्वेश्चंस पूछने थे कि ये सफिशिएंट है क्या अगर मैं सिर्फ क्लास नोट्स के क्वेश्चंस कर लूँ और PYQs कर लूँ, और मतलब बुकलेट के एक्सरसाइजेज या कुछ बाकी कुछ नहीं करूँ? अगर उसके बाद तुम लाइक जो क्वेश्चन सर देंगे, जो मॉक क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद तुम वो सॉल्व कर पा रहे हो इजीली, तो सफिशिएंट है. अगर नहीं कर पाए तो उस कॉन्सेप्ट जो भी डिफिकल्टीज हो रही हैं, उस कॉन्सेप्ट के और क्वेश्चंस करो. और मुझे पूछना था, सॉरी मैं इतना टाइम ले रही हूँ, मुझे पूछना था कि जैसे कि अभी भी मैं रात में सोने से पहले आपने बोला था ना रिवाइज़ करना है, तो मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, लेकिन ये हो रहा है कि इतनी सारी चीज़ें इकट्ठा हो रही है कि मैं बाद में भूल ही जा रही हूँ जनरल नॉलेज में. तो हाईलाइट कर लो चीजें, जो चीज भूल रहे हो तो एक नेक्स्ट पेज पे तुम लिख लो जो जो चीज तुम भूल गए थे, उन्हें हाईलाइट करो और उन चीजों पे ज्यादा इफेक्टिव वे से तुम पढ़ो. ओके, थैंक यू. फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे बैलेंस करते थे बाद में इन सब के अलावा? फिजिक्स तो मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, बट मैंने तो जितना सर ने पढ़ाया था मैंने वही पढ़ा था. सच्ची बताऊं तो गलत बात है क्योंकि मेरे मार्क्स नहीं आए थे. मैं घर पे मैंने जेई पे ज्यादा फोकस कर दिया. एंड फिर जो सर के नोट्स थे, जो मेरे बोर्ड्स के एग्जाम थे, उसके कुछ टाइम, अच्छा ओ हाँ, आई स्टडी फिजिक्स फ्रॉम संजय सर, एंड उनने ही करवाया था जो सारे नोट्स एंड ऑल थे. तो मैंने उन्हीं के क्वेश्चन सॉल्व किए थे मेनली. मेरे कितने, मेरे 80 समथिंग आए थे. मेरे 80s में आए थे आई गेस, 80 से, हाँ 80 आया था ना, मुझे याद नहीं. Quite good. 80s आए थे, कितने आए थे मैं भूल गई, मुझे नहीं पता. नाटा, मैं जेई में हो गया था तो मैं नाटा पे इतना किया नहीं टू बी ऑनेस्ट. मैंने एक ही नाटा दिया था एंड वो भी पढ़ के नहीं दिया. मेरा मेन एम वाज जे. आई गॉट 87%. Yeah. Thank you. Thank you guys. Wish you all the very best. Keep Thank coming you. back. Don't Thank. forget us. I would never. अब तो पास में हो. Wish you all the very best for a great. Thank you. All right, guys, ending the class. Thank you, sir. Bye.